Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello! Thank you for joining me today. This year has started on an interesting note. Personally, I have let go of some of the professional work to focus on little fixes and on learning new things. कुछ बहुत ही अमेजिंग लोगों से मुझे एनकरेजमेंट मिला है फॉर द काइंड ऑफ कंटेंट आई शेयर ऑन लिटिल फिक्सेस. उनमें से एक है श्रुति निगम बैंगलोर से. She even shared an insightful article about how you can help yourself if you have COVID. Very useful tips for people living in urban areas. I have linked it in the show notes, but I sincerely hope कि आपको इन टिप्स की जरूरत ना पड़े. But it's always good to be prepared, yeah? So आपके मैसेजेस के साथ इस तरह का मोटिवेशन बहुत सरियल लगता है. It makes me so happy and grateful. And Little Fixes में अभी के लिए नए एपिसोड्स हर महीने 5th and 20th को आ रहे हैं, but I hope to resume the weekly schedule in some time. Okay, अब चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ. सो आज का एपिसोड है इंस्टाग्राम के बारे में. इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजीज फॉर 2021 इज स्टिल इन आवर टॉप 5 एपिसोड्स. सो मुझे पता है कि आपको ये एक्सपर्ट टिप्स पसंद है. आज हमारी गेस्ट एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगी 2022 के लिए इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी बनाने में. चाहे आप क्रिएटर हो या स्मॉल बिजनेस, वीडियो से लेके मेटावर्स तक की बातें होंगी और रिवील होंगे एल्गोरिदम हैक्स भी. तो हमारी आज की गेस्ट हैं अमी सावला हेमानी, who is a social media trainer and a consultant. Let's welcome her. Hi Ami, I'm thrilled to have you on Little Fixes. Hi Maitri, thank you so much for inviting me on your podcast. I'm very, very excited for this. So yeah, let's get started. Yeah, so before we start Ami, we'd like to know about your work, what you do. क्या आप हमेशा से सोशल मीडिया मार्केटर थी या आपने पहले कुछ और किया and then you moved into it? तो yeah, do let us know. So that's a great question. It's been an amazing journey and I've evolved. मैं काफी इवॉल्व हुई हूँ. So social media कभी भी मुझे नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाने वाली हूँ. So actually if you see, I've done my MBA in human resources and मेरे को HR में ही अपना करियर बनाना था. And that's the reason I started studying MBA and then I got a job in an IT company also as an associate consultant for HR in a very good IT company. And realized in 2 years that, oh, this is not me, this is not my cup of tea, or this is something which does not fit my bill. तो आई रियलाइज कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, कुछ और करना है. क्या दूसरा जॉब करना है या डू समथिंग ऑफ माय ओन. एंड हमेशा से मेरी फैमिली, माय फादर, माय ब्रदर हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड मेरे घर पे सारे ही लोग हैव बीन एंटरप्रेन्योर्स. माय फादर, माय ब्रदर, माय कजिन सिस्टर्स, एवरीवन कुछ ना कुछ अपना करते हैं. सो वो एक पुश हमेशा ही था कि तुमको कुछ अपना करना है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना है. एंड तभी जब भी मुझे पूरा प्लान था कि आई वांट टू leave the job, तभी मुझे एक आइडिया आया and I was talking to someone and I got an amazing idea where I wanted to get back the online the barter trade online. For example, अगर आप centuries पहले देखेंगे तो सब कुछ barter पे ही होता था. जैसे अगर मेरे पास wheat है और आपके पास बाजरा है तो हम लोग barter कर सकते हैं. So मैंने सोचा ये क्यों हम लोग ऑनलाइन नहीं लेके आ सकते और let do it for the new generation. So for example, अगर आप वेबसाइट डिजाइनर और मैं सोशल मीडिया डिजाइन ट्रेनर हूँ तो मैं आपके लिए ट्रेनिंग करूंगी और आप मेरे लिए वेबसाइट बनाओगे. So no, barter, that's what my entire concept was. And मैंने घर पे ये बात किया कि मुझे ये करना है. And my father, my brother, both of them are very excited. They said कि you should, भले क्या होगा पता नहीं. And I was very young also that time. So they said that you should pursue this. Immediately in a week, I put down my papers. I was on notice period for 3 months. काफी सारा research किया तभी बैठ के कि क्या क्या कर सकते हैं. With the help of my father, हमने एक छोटी सी ऑफिस भी रेंट पे ले ली. And we were like कि ये बार्टर कैसे चलेगा. तो छोटी छोटी चीजें हम करते थे कि बार्टर पे कुछ फर्नीचर लेके आ गए और एक्सचेंज में हम लोग ने किसी के लिए एक प्रोजेक्ट कर दिया. एंड काफी सारी चीजें हमने ऑफिस में भी बार्टर के थ्रू बनाई. And I got some amazing response even online. तभी मैंने social media, I used a lot to promote that concept. And it really helped me a lot. So मैंने around 8 to 9 events किए to very very big institutes like IIT Bombay, Mithibai college, MET college. वहाँ पे मैं books barter करती थी. Then काला घोड़ा में मुझे free space मिला था and I did multiple events there too.
So बहुत ही अच्छा जा रहा था, but something was not working right, means monetarily it was not giving me benefits, because as I said, business acumen नहीं था मुझे कि इसको कैसे monetary benefits लाया जाए. तो of course I got a lot of popularity. I got featured in Times of India, Hindustan Times, DNA उसके लिए. I got a number of articles featured. मुझे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले उस स्टार्टअप के लिए, बट एज आई सेड समहाउ मनी वाज नॉट कमिंग इन, एंड ब्रेक इवन ही हो रहा था, और बहुत सारा जो मेरा सैलरी का भी पैसा था, मेरे भाई पापा के भी पैसे थे, काफी सब ये स्टार्टअप में लगे हुए थे. सो आई सेड कि ओके, अभी ये चल तो रहा है, बट कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा टू सस्टेन द स्टार्टअप. दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ये स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आई यूज्ड सोशल मीडिया अ लॉट. So social media was very powerful tool for and जो popularity मुझे मिली वो सारी social media के through मिली, because I was able to put that up aptly. So मैं तभी सोच रही थी कि मेरी जैसी इतनी कितनी women होंगी जो खुद से अपना छोटा business चला रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, and they always have to be dependent on their husband or their children to do things for them. So I said कि मुझे कोई बहुत बड़ी institute नहीं खोलनी है, but I can start something part-time that I can teach these women of how to use social media for their business, and then whatever money I get, I'll put into that startup. And even for these women, it'll be nice because they don't have to be dependent on anyone further. So that's how the journey started. I rolled out things. Okay, this is what I'm going to teach you. This, that, and trust me, the things went on so. मतलब इतनी अच्छी से वो जा रही थी कि within few months I got amazing. I started getting amazing responses. Like हमारे बॉम्बे में यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, देयर आर मॉमी ग्रुप्स एंड देयर आर एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स, वुमेन ग्रुप्स. सो मैंने क्या किया, स्टार्टेड टाइंग अप विद देम, जो एडमिन्स होते हैं ग्रुप के, उनके साथ मैंने टाई अप करना स्टार्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग दीस पीपल. So I remember एक ग्रुप है, मॉमी का ग्रुप, who all are also entrepreneurs. She has nearly given me 300 women up तक for my workshops. So I realized, oh wow, this is super. You're helping someone to get independent and you're also making a living for yourself. एंड मेरा जो सोशल मीडिया का जो ट्रेनिंग का बिजनेस था वो इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा, इतना ज्यादा मेरा टाइम जाने लगा उसमें कि जो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था उसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, एंड इवेंचुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैड टू स्टॉप दैट स्टार्टअप, and from there my entire trading journey started. So yeah, this is how the entire thing was. Wow, it's very interesting and very inspiring. और actually एपिसोड शुरू करने से पहले ही एक टेक अवे मिल गया है कि you can pivot at any time and you can use your skill in different ways. कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज सीखी है उसका आप वहीं यूज कर रहे हैं, आप उसको किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, एक नया बिजनेस बना सकते हैं. लेट्स नॉट थिंक कि ये कर लिया है तो अब यही कर सकते हैं, कुछ और तो कर ही नहीं सकते. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग. या सो अमी, अब आते हैं हम आज के कंटेंट पर. तो इंस्टाग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो द फर्स्ट थिंग ऑन माय माइंड इज वीडियो. तो आई थिंक सबने अब तक सुन लिया होगा कि एडम मॉजरी ने बोला था कि इंस्टाग्राम इज गोइंग टू डबल डाउन ऑन वीडियोस. तो वीडियोस, और अभी भी मतलब आई थिंक पीपल आर लर्निंग टू बी मोर कंफर्टेबल विद वीडियोस, चाहे वो आपको अपना फेस दिखाना हो या नहीं दिखाना हो. बट अभी भी स्टैटिक पिक्चर्स बहुत सारे लोग हैं जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं और उसको ज्यादा पोस्ट भी करते हैं. तो ये जो शिफ्ट है टुवर्ड्स वीडियोस, व्हाट डज इट इम्प्लाई फॉर क्रिएटर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस? So मैंने रियलाइज किया था जब ये पूरा IGTV इंट्रोड्यूस किया था इंस्टाग्राम ने, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ ह्यूज फेलियर फॉर देम. Okay, IGTV, to be very honest, didn't work for them because it was a longer video content. Now you have to understand कि कोई ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे longer videos people are comfortable watching, जैसे YouTube. अगर मुझे कुछ भी वीडियो कंटेंट देखना है तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं जाऊंगी, मैं सीधा यूट्यूब पे जाऊँ. Okay, so now that was a failure which because of which IGTV really didn't work for them. Okay, then they realized कि okay, ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं जिससे पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है. So अगर आप टिकटॉक देखोगे तो शॉर्टर वीडियोस, तो वैसे ही फिर उन्होंने रील्स इंट्रोड्यूस किया इंस्टाग्राम ने, एंड they saw that overnight success on reels. Okay, so they realized कि अलग अलग वीडियो फॉर्मेट्स है, अगर वो उनको डिक्रीज करके कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो उनके लिए वर्क कर रहा है, इफ दे फोकस ऑन दैट, इट विल बी मच मोर बेटर फॉर देम. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. IGTV didn't work for them at all, but if you see vis-a-vis, reels worked like wonderful for them. It really opened a lot of different things for them, creators, and लोगों की लाइफ जो टिकटॉक पे बंद हो गई थी अभी, एटलीस्ट इंडिया में, तो with Instagram reels things really started booming. So I think it was a good step, and now they are also kind of doing a little bit of permutation with different kind of videos. So I think that's a good thing to be done, and that's the right step that Instagram has taken, according to me. So do you encourage these people, like these brands, to post more videos? Because अब तो वीडियो का भी एक डेडिकेटेड टैब है. तो आप बोलोगे कि हाँ, यू हैव टू फोकस ऑन वीडियोस, या फिर मतलब किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए विद रिगार्ड्स टू वीडियोस?
करेक्ट. सो इंस्टाग्राम पे अगर हम देखेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. मतलब वी आल्सो सीन एंड एक्सपेरिमेंटेड विद आवर डिफरेंट क्लाइंट्स आल्सो. वी रियलाइज दैट एक ही चीज का अगर आप कंटेंट डालते हो ना तो वो आपका पेज भी काफी मोनोटोनस हो जाता है. सो यू हैव टू कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स. सो कभी आपने एक स्टैटिक पोस्ट डाल दिया, कभी कराउजल डाल दिया, कभी वीडियो डाल दिया, कभी रील डाल दिया, कभी लाइव कर दिया, उसको अपने वीडियो में डाल दिया, कभी स्टोरीज ज्यादा कर दिए. सो यू शुड हैव a good balance between all of them. But having said that, रील्स का जो वीडियो का ऑप्शन है, यू शुड डेफिनेटली यूज दैट बिकॉज राइट नाउ इंस्टाग्राम उसको बहुत हेवीली प्रमोट कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू बी लिटिल डिफरेंट विद द वे यू क्रिएटिंग कंटेंट विद रील्स. अगर आप सेम ही अपने सिर्फ प्रोडक्ट फोकस रील्स बनाओगे, दिस नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू बिकॉज नाउ मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर क्रिएटिंग रील्स. सो व्हाट इज इट दैट डिफरेंट थिंग दैट यू गोइंग टू गिव व्हिच इज रियली गोइंग टू गेट यू मोर एंड मोर विजिटर्स ऑन योर पेज. तो यस, वीडियो कंटेंट बनाओ, लेकिन डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ओनली टू दैट. ट्राई विद द अदर फीचर्स आल्सो दैट इंस्टाग्राम इज गिविंग यू, because using all of them together is what is going to give you good results. ओके, तो मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जो स्टैटिक पोस्ट हैं दे आर फॉर योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस, और जो रील्स हैं वो नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, राइट? तो डू यू थिंक कि स्टैटिक पोस्ट का इतना ही रोल है या फिर इट कैन गो बियॉन्ड दिस? बिकॉज अभी भी मुझे अपने एक्सप्लोर पेज पे बहुत सारी स्टैटिक पोस्ट दिखती हैं विच आर नॉट कैरोसेल्स. करेक्ट करेक्ट. स्टैटिक पोस्ट, यस, दे वर्क रियली वेल. अगर आप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ही देखो, या अगर कोई स्टोरीज देखो, ह्यूमन स्टोरीज देखो, तो वो स्टिल एक ही अच्छा फोटो डाल दिया है. अगर कोई बहुत बड़े एनजीओ के भी फोटोज देखोगे तो वो बेनिफिशियरीज के स्टोरीज डालते हैं, फोटोज डालते हैं. सो एक ही फोटो एकदम इम्पैक्टफुल और उसका नीचे स्टोरी होता है, इट इज स्टिल गोइंग टू वर्क रियली ग्रेट फॉर यू. सो एट द एंड आई वुड से दैट आप कोई भी फॉर्मेट यूज करो, रील करो, कराउजल करो, स्टैटिक करो, एट द एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर यू पुटिंग द कंटेंट दैट योर ऑडियंस वांट्स टू सी. फिर वो चाहे कुछ भी हो, वो लोग वो देखने वाले हैं. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इट दैट योर ऑडियंस वांट्स. लेकिन इफ यू गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू शो योर ऑडियंस, दैट इज नॉट हाउ सोशल मीडिया वर्क्स. इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड. सो आई वुड सजेस्ट बैलेंस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हैशटैग्स का रोल बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है. अब इंस्टाग्राम बोलता है यूज, आई थिंक 4-5 हैशटैग्स बोला था लास्ट. तो और साथ में अभी हमारा रेगुलर सर्च फीचर भी आ गया. लाइक यू डोंट हैव टू टाइप हैशटैग इंस्टाग्राम ट्रेनर, यू कैन सिंपली टाइप इंस्टाग्राम ट्रेनर एंड यू विल गेट रिजल्ट्स. तो डू यू थिंक कि हैशटैग यूज करना इंपॉर्टेंट है अभी भी, या फिर यू कैन डू अवे विद इट एंड इंक्लूड द रेलेवेंट things in your caption and in your alt text? Okay. So great question. सी, अगर इंस्टाग्राम में एक फीचर दिया हुआ है हैशटैग्स का, एंड इफ यू सी पूरा सर्च में उसका एक बहुत बड़ा एक प्लेस है, सो यू शुड यूज देम. बट यस, यू आर राइट, 30 हैशटैग्स जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसका थोड़ा इतने ज्यादा हैशटैग्स की नहीं जरूरत है, क्योंकि लोग वी हैव सीन दैट काफी इररेलेवेंट हैशटैग्स भी डालते हैं, फॉलो फॉर फॉलो और फॉलो बैक. नाउ दोस काइंड ऑफ हैशटैग्स आर नॉट नीडेड. दे जस्ट पुट हैशटैग्स टू गेट देमसेल्व्स फाउंड. लेकिन वो अभी चीज इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया. अगर आप इररेलेवेंट टोटली हैशटैग्स डालोगे तो कोई मतलब नहीं है. लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट you should have a combination of good hashtags. So have post related hashtags, have brand hashtags, have trending hashtags. ये थोड़े बहुत ज्यादा नीश करो, थोड़े बहुत ज्यादा जो लोग सर्च कर रहे हैं वैसा करोगे, वैसे कॉम्बिनेशन अगर आप हैशटैग्स यूज करते हो तो इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. ओके, एक्सप्लोर सेक्शन पे भी जाके आप हैशटैग्स को सर्च कर सकते हो. कौन से हैशटैग्स पे सबसे ऊपर कौन से पोस्ट आ रहे हैं, व्हाई देयर पोस्ट आर कमिंग अप, व्हाट काइंड ऑफ हैशटैग्स दे आर यूजिंग. सो दैट काइंड ऑफ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो करना जरूरी है. बट यस, आई वुड सजेस्ट दैट डोंट ओवर डू. 30 हैशटैग्स की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है. परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो. कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग. बट आई वुड सजेस्ट एनीवेयर बिटवीन 4 to 7 हैशटैग्स आर गुड. बट ट्राई टू बी एज रेलेवेंट एज पॉसिबल. Just to get more eyeballs, don't use irrelevant hashtags at all. अच्छा, अगर मान लीजिए कोई हैशटैग 30 के 30 यूज कर ले और 30 ही रेलेवेंट है, तो इज इट हेल्पफुल, या फिर वो भी मार्क हो जाएगा कि इसकी रीच कम हो जाएगी बिकॉज दे हैव यूज्ड ऑल 30? ऐसा कुछ है आई क्या? डोंट थिंक सो. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो. ये सारी बोलने की चीजें हैं. यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग. एज आई सेड, मैं तो क्या, हम लोग कभी कभी पोस्ट में समटाइम्स वी डोंट इवन गिव एनी हैशटैग. समटाइम्स वी पुट 4 hashtags, sometimes we put 30 hashtags, sometimes we put 10 hashtags. Every page responds differently with the kind of content you put, so there's no same thing के मैत्री के पेज के लिए जो काम किया वही अमी के पेज के लिए काम करेगा. Strategies, yes, you keep experimenting, but how your audience reacts to your post is going to be very different. So I keep telling my people, experiment. That's how you're going to come to know what is working for you. Just because मेरी बाजू वाली तो अभी स्टार्ट किया, she has 10,000 followers and I don't even have 2,000 followers, it will not work that way. वो आपको एक जो फोमो है या वो आपको हटाना पड़ेगा, and you have to focus on what works for you and you have to keep doing that. So I don't think that 30 hashtags अगर आपने डाले तो भी कोई इशू है. Of course you can definitely use them.
ओके, ओके। तो मतलब थोड़ा-सा इंटेंशनल ज़्यादा होने की ज़रूरत है कि अपनी एक तो आप स्ट्रैटेजी देखिए कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं। ये नहीं कि पोस्ट कर दिया फिर भूल गए कि हाँ, क्या किया था। मतलब यू हैव टू एग्जैक्टली। कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट एंड कीप लुकिंग बैक एट द एनालिसिस एंड एवरीथिंग। सो अभी जैसे हमारा हमने अभी वीडियोज़ की बात करी, थोड़ी-सी हैशटैग्स की बात करी, फिर अभी रील्स में भी अगर थोड़ी-सी बात करें तो जो रील्स हैं वो हम्म। इंस्टाग्राम हैज़ ऑब्वियसली गिवन 60 सेकंड तक का रील। बट स्टिल वी Correct. सी कि जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रील्स होती है वो मोस्टली शॉर्ट होती हैं, लाइक 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स में भी, 10-15 सेकेंड्स। तो डू यू थिंक कि छोटी छोटी रील्स बनाना ज्यादा किसी अकाउंट को बूस्ट करता है बिकॉज वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रेंड, और इज इट ओके टू मेक लॉन्गर रील्स इफ यू हैव द काइंड ऑफ कंटेंट which can be fit only in longer duration? Correct. I also completely agree that shorter reels, because you have to understand the attention span of a person. दिन ब हम्म, दिन वो छोटा होता जा रहा है, कम होते जा रहा है. हम्म, And people, जैसे अगर मेरे को भी 10 मिनट I want to just de-stress out, so I'm just going to go to the Instagram and keep scrolling, keep scrolling, keep scrolling. तो अगर वो reel बहुत ज्यादा बड़ी है यार, it is getting monotonous, I'm going to just stop it midway. So instead, go with shorter content so that they see your complete reel. हम्म, So once in a while it's fine. अगर कोई ट्यूटोरियल है, something that is useful for our audience, अगर आप हम्म, उनको कुछ सिखा रहे हो, कुछ DIY है, कुछ हैक है, कुछ टिप्स दे रहे हो, कुछ which is going to impact their lives, their professional lives, their personal lives in some or the other way, those kind of reels are fine. लेकिन अगर कुछ you want to do something entertaining, you want to show them something trending, for those I would suggest is restrict yourself to 50 to 30 seconds and not more than that, because as I said, the attention span is very low and you have to keep that person's attention intact for that period. Everyone doesn't have the capacity to create a 1 minute video or a reel which is going to keep that person totally on that reel. So it's very important that create shorter content and get more engagement on that particular thing. That is what हम्म, will work. हम्म। And from all of this, I heard the term impact. मतलब you also said कि अगर आपको लगता है कि ये impactful है, then yes, go ahead with it. But try to make shorter content if you want to go viral or trend or maybe attract more eyeballs, right? Correct. Mhm. ओके, सो अभी मान लीजिए आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स थ्रू थ्रू माय रील्स, बट इसमें बहुत सारे इररेलेवेंट फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। ये भी आई थिंक सबने देखा है, मैंने कई लोगों से बात भी करी, दे सेड कि हाँ, इंस्टाग्राम ने मेरी रील फीचर कर दी, आई गॉट 20,000 फॉलोअर्स आउट ऑफ इट, बट उसमें से कोई भी मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं था। यस, आई गॉट नंबर्स। इसमें मतलब आपके क्या थॉट्स हैं कि रील वायरल जाने पे किस तरीके का बेनिफिट होता है? So yes, of course, ये तो है ही कि now there are a lot of people who know you, and lot of people जिनके accounts के साथ you've started engaging. But yeah, जो irrelevant है, I would suggest that once in 15-20 days you should just check your followers and see if they're totally irrelevant bots है, या अगर ऐसा कोई है जहाँ पे जिनके प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है या ऐसे ही कुछ रैंडम है, I would suggest you to delete them. Because वो एक अच्छा क्लीन प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज आई टेल यू, फ्यूचर में बहुत सारी चीजों पर वो इम्पैक्ट करता है, जो आपके टाइप ऑफ फॉलोअर्स भी है. जैसे आई हैव लॉट ऑफ पीपल, दे कम टू माय क्लास, दे हैव 60,000 फॉलोअर्स, 70,000 फॉलोअर्स, एंड दे आर लाइक अमी वी आर स्टक. हम्म, नंबर तो आ गया है, बट इट्स नॉट गिविंग अस एनीथिंग. So if हम्म, it is not giving you business, it's not giving you conversions, it's not giving you inquiries, what is the use of those 60,000 followers? Okay, हम्म, and it's going to impact also. What will happen is eventually, अगर आप ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई विकीपीडिया पेज के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो सोशल इंटरनेट प्रेजेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ अगर आप नंबर्स नंबर्स दिखा रहे हो and your content is not talking simultaneous to your numbers, or your engagement is not giving complementing the number of followers you have, it's not going to work. And then irrelevant followers से कोई मतलब भी नहीं है, just वो हम्म, numbers बढ़ा के, actually in the long run you're doing more harm to your page rather than doing any good. So I would suggest, and once in a while, do a quality check of your page, see irrelevant followers, and it's okay to delete them. Okay, I might not say let's delete them in bulk, but हम्म, 10-15, if you feel they're totally irrelevant, you should, because you never know. Some of them could be hackers. I have seen so many people, their accounts getting hacked because they have such followers, and then they do something to your page, and they send you some link, and you click on that link, and push your account is hacked. So I have yeah. had so many people. So why to get into such things just to get those numbers? हम्म, Grow steadily. Trust me, it will work for you. But don't get into such things of having such followers which are totally irrelevant, because it can do real bad harm to you in the long run.
तो भले ही आपने फॉलोअर्स खरीदे हो या नहीं खरीदे हो, अगर आपके पास बॉट्स हैं या घोस्ट फॉलोअर्स हैं जो आपके अकाउंट पे एंगेज नहीं कर रहे हैं, तो डू रिमूव दैम। मतलब अटके मत रहो कि नहीं मेरे तो 30 हैं, 20 हो जाएंगे या मे बी 28 हो जाएंगे। तो इस पे मत अटके रहिए। आप थोड़ा सा क्वालिटी चेक, जैसा कि अमी ने बोला, वो कीजिए, और आपका जो पेज है इट विल बी बूस्टेड, और मतलब जो एंगेजमेंट है सब कुछ अच्छा जाएगा। तो डू ट्राई दिस। देन अब बात करते हैं हम स्टोरीज के बारे में। तो स्टोरीज की भी इम्पोर्टेंस अच्छी खासी है और अभी बढ़ती जा रही है। लाइक पहले ये था कि हाँ, स्टोरी पहले तो जब आई थी तब तो लोग सोचते थे डालना ही क्या है। अभी धीरे धीरे आई थिंक रेयरली एनी वन स्क्रोल्स थ्रू देयर फीड। मे बी 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लोगे, बाकी वी आर हुक टू स्टोरीज। हम लोग ऊपर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, और स्टोरीज अब इनफैक्ट फीड में भी आने लग गई हैं कि आप जिन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हो यू कैन गो थ्रू देयर स्टोरीज। तो जो स्टोरीज की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है, एंड देयर वर आल्सो रूमर्स की स्टोरीज की अलग से फीड भी बन सकती है। तो ये सब जो रूमर्स है इनमें कितना दम है, या फिर हाउ कैन वी वर्क टुवर्ड्स इट कि हम स्टोरीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए? Yeah, so Maiti, that's a great question. Stories are here to stay. I don't think, as per me, they are going to get them in the feed. I mean, in your normal grid style. But yes, जो highlights में जो हम हमारे story save कर सकते हैं या उसको upload कर सकते हैं, या जो normal हमारी जो stories है, वो काफी चलने वाली है, and it's going to, it's, I think it's there to stay because it's helping Instagram also a lot. And हमारे जो यूजर्स है, वी कैन ऑल्सो एंगेज विद देम इन अ बेटर वे. सो साइकोलॉजिकली समथिंग that's going to get over tomorrow, or a sale or a discount, for 2 days, 5 days is going to get over. So there's this entire psychological factor called FOMO, fear of missing out. उस पे ये स्टोरीज चल रही है. अगर आप देखोगे तो स्टोरीज 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाती है. नाउ पीपल आर ऑलवेज क्यूरियस कि क्या हो रहा है, ये ब्रांड ने क्या डाला, इसने क्या डाला. So if you see that way, stories really work well. Okay, and of course स्टैटिक स्टोरीज नहीं काम करती अगर आप सिर्फ अपना एक प्रोडक्ट डाल देते हो, या अगर आपको पोस्ट टू स्टोरी डाल दिया है, तो वो सारे हम लोग ने वी सीन आवर ट्रायल एंड वी फिगर्ड आउट those kind of stories don't really work that well. But if you've done engaging stories, you're asking them questions, you are asking someone to take over your stories for a day, you're doing like a Q&A with them, or you're doing like a poll, or you're doing like a quiz on your stories, or you're making it something interactive. And I've also seen when there are 3 to 4 slides together in a story, like you're showing a work in progress, behind the scenes. So this is step 1, step 2, step 3, step 4. Vese kind of stories, trust me, are working very well. Now what happens with that also, because you have more slides, so your audience is spending more time on your page. That gives Instagram a green signal that, oh, this page is doing well because people are spending more time on your page, on your stories, on your account. So that way, if you see, stories are working very well. But yes, the kind of stories that you use again becomes very, very important. So 2-3 tips were: one, use interactive stories. Second, be very, very creative in your stories. I've seen so many brands, they play games on stories. I saw one creator, he used to do Pictionary. He used to create something and then used to say, who can guess this thing what I've drawn on the story. So try making it as interactive as possible, and trust me, stories is here to stay. And if you put good content in your stories, it's going to work for your audience for sure. ओके, और जो स्टोरीज हैं वो हमारे जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं वो ही देख सकते हैं, तो इट्स अ ग्रेट वे टू कीप देम हुक्ड टू आवर कंटेंट। करेक्ट. अच्छा, अगर आपका प्रोफाइल पब्लिक है, जैसे बिजनेस प्रोफाइल है, वो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो उसके लिए आपके न्यू लोग भी, सपोज दे जस्ट बम ऑन टू योर पेज एंड दे आर चेकिंग आवर स्टोरीज, मे बी टू स्टोरीज दे माइट फॉलो यू आल्सो. सो दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद योर ऑडियंस टू. नाउ आई आल्सो डू इट। लाइक मुझे किसी ब्रांड में इंटरेस्ट है कि आई वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम देम, तो आई मे नॉट फॉलो देम बट आई डू चेक आउट देयर स्टोरीज कि वो क्या डाल रहे हैं। कई बार उसमें बहुत अच्छा कंटेंट भी मिल जाता है, समथिंग व्हिच हेल्प्स यू। हाइलाइट्स में जाके आप देख सकते हो, जैसा कि आपने बोला भी। करेक्ट. ओके, सो अभी आते हैं एक्सप्लोर पेज की तरफ। एक्सप्लोर पेज पे जाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है और इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी हैं, पोस्ट भी हैं कि आप कैसे एक्सप्लोर पेज में जा सकते हो। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर्क्स फॉर गेटिंग ऑन द एक्सप्लोर पेज ऑफ इंस्टाग्राम? Okay, मैंने तो ऑफ कोर्स देखे हैं. सो समथिंग which is out of the box, which is creative, which your audience wants, we definitely see. Like I volunteer for this NGO, जिसके सोशल मीडिया पे हम लोग की टीम है, हम लोग काम करती है, वो उसको we volunteer for that NGO. तो we've seen that हमारे couple of posts explore तक पहुंचे because the teams thinks about out of the box ideas. So one is that thing, you have to be very, very creative. What your people want, what is trending, the music, the content that you're putting up. And secondly, I've seen listicles जो type के जो post होते हैं,
5 hacks, 10 secrets, 15 unknown things. ये सारी जो चीजें होती है ना, if you really use them well, you would be seeing on your explore. वो kind of things also really work well on your explore page. So try using, जैसा हम लोग ने अभी एक post डाला था, which really did fantastically well for us. 8 secret Instagram fonts, and we just did like a normal carousel post, and we got some amazing response. We got a lot of new followers through that, because apparently, that was more discoverable. So that way, if you put up those kind of posts, we've seen that it really works well. So out of the box content, try to be as creative as possible. Use listicles as one of your post ideas, and use trending concepts and trending music reels, to be there. But yes, having said that, it's not that easy to come to explore. You have to keep experimenting, and maybe you might get lucky one day. ओके मतलब कंसिस्टेंट रहना, वैल्यूएबल कंटेंट देना, वही जो बेसिक्स है। आई थिंक अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम विल रिवॉर्ड यू विद एक्सप्लोर। Correct. ओके, Correct. तो अभी अब we will get to algorithm hacks, but before that I want to talk a little about metaverse. Like जब से Facebook ने अपना नाम मेटा रखा है, सबको metaverse पता चल गया। Like it has been there, लेकिन तब इतनी बात नहीं होती थी, but when Facebook does something we notice. तो अभी बहुत चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के साथ ये मेटावर्स का, ये AR VR, तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। आई कीप रीडिंग अबाउट इट, आई कीप लिसनिंग टू पॉडकास्ट अबाउट इट, बट इट गेट्स रियली ओवरवेलमिंग एट टाइम्स आल्सो। तो डू यू थिंक कि वी शुड स्टार्ट learning it to amp up our social media game in the future, or like what's going to be the scope of this metaverse? So yes, it was like a concept few years ago, but now अगर आप देखोगे तो पूरा कोविड का जो था, लॉकडाउन जो था, उसमें काफी सारी चीजें, people were going online, and now online was becoming more like a reality. So in every home, like if you see every other home, online was the thing. School to online, games to online, birthday parties online, everything is online. So everyone has got hooked onto the online world also so much, and of course uske pros and cons dono hai. I'm not getting into that, but having said that, yes, we might see a lot of things. ऐसे you see your virtual reality, augmented reality, या जो भी सब चीजें हैं आजकल थोड़ी गेम्स में भी आ गया है, where you can feel that you're a part of that. If you're racing a car with your friend, you feel that you are sitting in that car, and you get entire experience. और some ऐसे थोड़े कोई थोड़े टाइप के चश्मे भी आए हैं, where you wear that, and I remember my cousin telling me that, Ami, we've got this from somewhere, just you can actually watch Harry Potter in this, and you can feel that you're part of that movie, and you're doing things over there. So of course it is here to stay, and it's going to just get bigger and better over the years. But I don't know, is it good, is it harmful, or maybe the organic part of our lives might get missed into this entire thing. But yes, this is for sure going to be there, and you never know, sitting at home, abhi to hum log online shopping karte hain, but how is it going to look on my body? How is this glasses going to look on my face? So ye sari cheezein, they are going to make it more finer, more better, and I'm sure, sitting at home, you'll get all the experience which you right now get only while going out. So yeah, it's the future, and it's here to stay. ओके, तो मतलब ब्रांड्स हो या क्रिएटर्स हो, सबको इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए, मतलब सोचना स्टार्ट कर दें कि व्हाट यू कैन डू इन द फ्यूचर। मतलब डोंट डिसमिस इट। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये तो बस एक फैड है, चला जाएगा, बट आई आल्सो फील कि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। करेक्ट, लाइक इफ यू सी क्रिप्टो करेंसीज या जो भी हमारे ऑनलाइन करेंसीज आ रहे हैं, सो नाउ भले इतना सारा पॉपुलैरिटी नहीं हो रहा है, बट कोई भी चीज स्टार्टिंग में तो इट वाज जस्ट एन आइडिया, एंड यू लाइक एन एरोप्लेन और अ हेलीकॉप्टर, जस्ट आइडिया, ऐसा कुछ उड़ सकता है, नो वन न्यू, and everyone thought that, oh, he's a madman, ऐसा थोड़ी कुछ उड़ सकता है, but it's happening now. So something started as a dream, and then it's a reality after a few years. हाँ, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के बारे में भी सबने यही बोला था पहले कि इट्स नॉट गोना हैपन, लाइक ये बच्चों की चीज है या फिर ये होएगा ही नहीं, मतलब इट इज गोइंग टू गेट ओवर बिफोर इट इवन स्टार्ट्स। बट अभी हम लोग उसके बारे में पूरा एक एपिसोड कर रहे हैं। लाइक एवरीवेयर पीपल वांट टू लर्न मोर अबाउट सोशल मीडिया, और अभी जो नई चीजें आ रही हैं, द यंगर जनरेशन इज ऑल्सो मोर इन्वॉल्व इन इट, तो उन्हीं के हिसाब से आई थिंक इन सब चीजों का भी इवोल्यूशन धीरे धीरे होता जाएगा, एंड वी हैव टू टेक नोट ऑफ इट, एंड वी आई थिंक should start thinking कि हमारी भाई मूविंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। करेक्ट। और अब जो हमारे एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, हम उसके उस पर आ चुके हैं, एंड द क्वेश्चन इज द मोस्ट अवेटेड वन कि हैक्स, लाइक पीपल लव हैक्स, तो वी वुड लाइक टू नो 5 एल्गोरिदम हैक्स कि भाई इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को हम गेम कर सकते हैं, लोग ऐसा भी मानते हैं, आई डोंट नो। तो ऐसे कौन से 5 हैक्स आप लोगों को देना चाहेंगी जिससे दे कैन बूस्ट देयर इंस्टाग्राम अकाउंट?
ओके, वन थिंग दैट आई कीप टेलिंग माय ऑडियंस इज डोंट ट्राई टू चीट द सिस्टम, ठीक है? उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो कि चलो इंस्टाग्राम स्मार्ट है, हम उनसे भी स्मार्ट बनेंगे, हम ऐसा करेंगे। सो डोंट डू दैट। व्हाटएवर दे आर गिविंग यू, उसको अच्छे से यूज करो अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए ऐसी कोई रॉन्ग चीज आप करोगे तो आप इमीडिएटली तो ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, और दूसरा पूरा रेड अलर्ट आ जाएगा आपके अकाउंट पे। सो यू डोंट वांट टू डू अननेसेसरली गेट इन दैट। सो डोंट ट्राई टू चीट द सिस्टम, be in the system, use it proactively and nicely for yourself. Second, yes, put good content, put great content, what your audience wants to see, not what you want to show them. Okay, and I've realized कि जितना आप लोगों को help करते हो सोशल मीडिया पे, किसी भी, for example, you're a dietitian, how much you're helping them, or for free also to start with, build a relationship with them. Just आके आज Instagram page बना दिया, कल से selling start. Don't do that. You have to build a relation. Like I have seen, I keep building. I share my failures. I share what are things that didn't work for me. How did I get over here? What are the kind of things that worked for me? So when I share this, what you're doing is you're building a relationship with your audience. They feel they're a part of your journey. So maybe not now. After 2 years, I will see that follower becoming my client. So you'll have to give time. So that's another thing very important is make them a part of your journey and share things which could be a part of your business or even your personal stuff. Just to make their lives a little better. Thirdly, as I said, do loads and loads of value based things. Try collaborating with experts, and like for example, hum log ne abhi beech mein kiya tha, get someone to take over your story for a day. So you will kind of help each other. So you will collaborate with that creator. Unke followers abhi aapko milenge, aapke followers unko milenge. Do Instagram lives with good experts. Do collaboration post. All these things are there, and trust me, it really helps you to get audience. Another hack that I've really seen work wonderful is, when I do a story, say for example, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, एंड मैंने एक बिलबोर्ड पे एक बहुत बड़ा स्विगी का एड देखा, ठीक है? सो व्हाट आई डू इज आई टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड आई विल पुट इट अप ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी, अमेजिंग एड and very creative @Swiggy India. Now what will happen is, I know these big brands, they always want to reshare this, because there's something good we are saying about them. So what happened, they'll reshare the story. When they reshare the story, their thousands of followers also come to know about you. Okay, so ऐसी छोटी छोटी चीजों में, अगर सपोज मैं कैनवा बहुत यूज करती हूँ अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कैनवा का नाम मेंशन करूँ। जो भी बिग बिग ब्रांड्स मैं यूज करती हूँ, इन सम और द अदर वे, try to use them in your, okay, don't of course randomly use them, but if you're using, for example, if you're a makeup artist and you're using some brands like MAC, Nykaa के कुछ products use कर रहे हो, at them, talk good about them. They're going to reshare it. When they reshare it, their followers are going to know about you. Okay, trust me, this is how we've really built great audience on our page, and it has really helped us amp up our page. Of course, having said that, do a lot of engagement posts. So I'll give you one example. जैसे अभी हम लोग एक DIY वर्कशॉप कर रहे हैं, I'm doing in collaboration with another creator, and we've already got around 100 registrations for that. It's a free workshop, but all you have to do is, you don't have to pay us, but you have to follow the 2 pages, tag 3 people, and like अगर आप normal giveaways करते हो, तो normal giveaways में क्या होता है, 10 लोग को गिफ्ट मिल गया तो दूसरे लोग they'll start unfollowing you. But this is something where if you give them, they will not unfollow you because you're giving it to everyone. So ऐसे भी हम लोग काफी सारे free workshops once in a while we are doing, where we are getting experts, and we are doing like a 1.5 hour session, and trust me, it works wonderful to amp up and do such engagement posts. That will really help you to build up your Instagram game. So yes, as I said, there are no I would say that there's no one who can become like an overnight Instagram success. Everyone, कोई भी field में dedication and being consistent and putting the right efforts is very important. Same way as on Instagram game. So don't try to, as I said, don't try to fool around with Instagram and try to become an overnight superstar. There are no such stories. Once in a while you might hear about it, but grow consistently, do good things, build good relationships, and trust me, that's the way to build up on social media. Yeah, right. And I agree with all the points. And I think it should act as a great reminder for people who are listening to this कि जो basics हैं उनको भी अगर आप अच्छे से करते हो, और जो Instagram की features हैं उनको आप properly use करते हो, तो फिर आपकी growth को कोई रोक नहीं सकता, भले ही धीमी होगी, but you will grow. राइट. और अगर अमी 2022 के लिए एक चीज जो हर किसी को माइंड में रखनी चाहिए कि इंस्टाग्राम पे बिजनेस के लिए, लाइक यू आर अ क्रिएटर तो यू नीड फॉलोअर्स, यू नीड बिजनेस आउट ऑफ देम, और यू आर अ स्मॉल बिजनेस तो यू वांट मोर रेवेन्यू आउट ऑफ योर सोशल मीडिया. तो 2022 में एक चीज जो हर ब्रांड को, हर इंस्टाग्राम पेज को याद रखनी चाहिए, वो क्या होगी आपके हिसाब से? Okay, so basically, of course, so it's Instagram is a social platform. First, you have to understand it's not a selling platform. So your mindset has to be right when you're coming on that platform.
If your mindset is I'm going to sell and I'm going to sell my products worth thousands and crores of rupees, no, it's not going to happen immediately, so have the right mindset. Even I tell the marketers, when you are dealing and when you're getting projects for your clients, be very, very clear. It's a social platform. It's not a selling platform. So think in that way. Build your brand very, very gradually. And trust me, conversions to aane hi hai. Kyun nahi aayenge? But you have to build it up in such a beautiful manner. See that your bio is up to date. Don't use long sentences in your bio. Put highlight, put bullet points, give good emojis, have your highlights in place, your cover pictures of your highlights in place, put up regular stories, put up reels, have your feed very aesthetically well, create a right color palette, use all text and use discoverable things, use the right hashtags, use great content, different kinds of variety of content. When you do a mix of right things, okay, come karo, it's okay, but do the right things. That's very, very important. So as I said, one, it's a social platform, not a selling platform. So wo mindset se agar aap apni strategy banaoge, trust me, you'll do better for you, in the long run. तो सोशल के हिसाब से चाहिए, सोशल रहिए, इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ इंगेज करिए, इंटरैक्ट कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए और वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, तो यू विल ग्रो दिस ईयर बाय लीप्स एंड बाउंड्स. और आमी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आपकी जो भी इनसाइट्स थी और जो भी आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपने नॉलेज गेन किया है, यू ग्रू योर ओन बिजनेस, नाउ यू हेल्प अदर बिजनेस ओनर्स, अदर पीपल विद देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस, which is amazing, and you shared it all so beautifully. Thank you so much for your time. Thank you so much, Maitri. Had a great time, and all the best to all the viewers. All the best to you too. God bless. Thank you, Ami. And before we let you go, we would also like to know कि आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में लोगों को अगर जानना है तो कहाँ पे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? So yes, you all can get in touch with me on LinkedIn, on Instagram, Ami Social Media Trainer. So ours is a page called Social Media Training Hub, जहाँ पे हम we do group workshops, we have our 5-day master classes, we have our corporate workshops, we have our one-on-one trainings, one-on-one strategizing and consulting. So ये सारी चीजों के लिए you can definitely get in touch with us, and we'll try our best to give you the best service. So do check out Social Media Training Hub on Instagram, and in fact उनका जो पेज है Instagram का, उस पे भी आपको बहुत सारे tips, tricks, hacks, ये सारी चीजें मिलेंगी which will help you in growing your business. And as Ami said, you can also check their products like the workshops they have. जितना भी अमी ने बताया हमें आज के एपिसोड में, इन सब में से कौन सी ट्रिक आप सबसे पहले यूज करने वाले हैं? लाइक क्या आपका टेक अवे रहा आज के एपिसोड से? मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे. मेरा हैंडल है @LittleFixesPodcast. सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट ऐप. एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे आप हमें रेट भी कर सकते हैं. तो अब मिलते हैं 20th फरवरी को. यस, बिकॉज आज है 5th फरवरी, हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा 20th को. तो मिलते हैं 20th फरवरी को. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.